ओके वी डिस्कस्ड आम पे ये आलोचना कले पृथ्वी रे आम दी प्रकार वस्तु को देखुचे गोटे वस्तु गोटे जगह गोटे जगह जापे गोटे जापे फिक्सड जी जापे ताको स्केलर क्वांटिटी तार केवल मैग्नीट्यूड अच्छी जी जापे से तार मैग्नीट्यूड सहित डायरेक्शन भी अच्छी तो कह वेक्टर क्वांटिटी राइट देन we discussed representation of vector. How to represent a vector? Vector को केमती represent करिबा? It is written a directed line segment means a line over an arrowhead represent a vector quantity. Example: suppose A B with a segment of the end point A to B की ଗୋଟେ line draw ହେଇची तो आ ऊपर गोटे एरो हेड देले बट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द वेक्टर इज कॉल्ड इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट ऑफ द वेक्टर इज कॉल्ड टर्मिनल पॉइंट वेक्टर टी ए बी की आरंभ हिची ए हला इनिशियल पॉइंट बी होची टर्मिनल पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट इज इनिशियल पॉइंट द फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड टर्मिनल पॉइंट दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर हाउ टू राइट इट ना ओवर एन एरो ए बी ओवर एन एरो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर और another form to represent vector आउ के मेथड रे वेक्टर लिखि परिबा that is bold letter A B without arrow bold letter A B एमती लिखिबार माने ये भी वेक्टर किंतु ये सब बडे संभव न लिखिया पड़े एटा समय लागे लिखिया पे तो सिंपली हम कोन करू जे बिले ओटे ओवर एन एरो दे दोची सिंपल जनरल अल्फाबेट लिखि के ओवर एन एरो This is the representation of vector. Next हमें जिबे characteristics of vector. Vector कौन सब characteristics अंडर करूची. First magnitude. Vector माने तार गोटे length segment अछि ताको magnitude को जाय the length of a vector is called its magnitude or the distance between initial point and terminal point of a vector is called magnitude or length. जदि a b गोटे vector हैला a हैला initial point b हैला terminal point ताले इनिशियल टर्मिनल पॉइंट भीतर जो डिस्टेंस टाइप को जाय तार मैग्नीट्यूड और लेंथ एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट नोट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर नेवर नेगेटिव कौन सी वेक्टर मैग्नीट्यूड नेगेटिव हे परिबो नाही एग्जांपल जदि ए बी गोटे वेक्टर हुए ए बी रो मैग्नीट्यूड ए बी ओवर एन एरो इज वेक्टर त दुईटा मॉड दे देले मॉड भीतर लिखिबाटा को रिप्रेजेंट करा जाय तार मैग्नीट्यूड एंड से मैग्नीट्यूड सब बेले नॉन नेगेटिव इट इज आइदर 0 और मे बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 or greater than 0. Next characteristics comes to sense. What is sense? The direction of a line segment, the directional path, the direction of a line segment from initial point to terminal point is called its sense. Is called its sense. Example: the sense of a vector AB is from A to B. If AB is a vector, then its sense is from A to B. Means the direction from A to B. What is the sense of BA? Suppose another vector I will write. This is B point, this is A point, the direction from B to A, the sense of BA vector is from B to A, but the sense of AB vector is from A to B. So clear? Acha. Next, another characteristics, support. What is support? The line of infinite length of which the line segment is a part. Suppose AB is an infinite length line. Suppose A, this is the line L. Having infinite length, it is extend to infinite. Its part, आ भितर जदि किछि पार्ट न नै दिबी सपोज एई पर्यंत in the direction of L, say L direction रे एटा को हुआ जाय तार सपोर्ट. What it is called? Support. L line रो सपोर्ट होची AB. Not necessarily AB. मु AC नेबी. AC is also another support of L. AD is the another support of L. ये सब से तार एक पार्ट. This is the plane. एटा जे सेगमेंट हला आर सपोर्ट होची दिस कैप जते स्मॉल पार्ट करी सब तार गोटे सपोर्ट द पार्ट ऑफ द होल तार पार्ट को सपोर्ट को जाय ओके एतरो बुझी गेले the next comes to types of vector there are following types of vector कितने प्रकार है First comes to localized vector. The vector whose initial point is fixed is called localized vector. Initial point fixed means suppose it is a B vector, whatever may be, but this is a vector.
So starting point by initial point is A, but what is the terminal point we don't know. Either it may be at here, or it may be at here, it may be at here, which is extend to infinite. But the starting point is given, which is called localized vector. Second comes to free vector. The free vector कौन? The vector whose initial point is independent. Whose initial point is independent. That is not fixed. जार starting point हमें जानी नहीं. Is called free vector. Example, this is a vector. Starting point is not given. तो ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି डॉट मार्क दे ଦେଇଛି ମାନେ ଆମେ ଏଇଟା ଜାଣି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛେ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଟର୍ମିନାଲ ପଏଣ୍ଟ ଜାଣିଛେ ବଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ଜାଣିନେ ଯାହାର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ଜାଣିନେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଫ୍ରି ଭେକ୍ଟର नेक्स्ट null vector or zero vector the vector whose magnitude is zero जो वेक्टर रो मैग्नीट्यूड नाही नाही माने जीरो बा दैट इज हम तो एमिति एक्सप्लेन करि परिबा इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड बट अ वेक्टर सपोज दिस इज अ वेक्टर whose initial point and terminal point coincides एटा आ ऊपर मर्ज करि जिवो ता माने योर ए जोटी बी बी सही दीटा तक गोटिए पॉइंट ताको को जाय छिले कोन ना तमरो नॉन वेक्टर या जीरो वेक्टर एंड तर डायरेक्शन पॉइंट जति वेक्टर टर्म आसिला त इट मस्ट हैव डायरेक्शन आर डायरेक्शन पिले आर्बिट्ररी व्हाट डू मीन बाय आर्बिट्ररी माने पिले कोन इनफाइनाइट मीनिंग सपोज एटा गोटे पॉइंट आर नो मैग्नीट्यूड बिकॉज़ इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट बिकॉज़ के टर्मिनल पॉइंट मर्ज करूची आर डायरेक्शन आर्बिट्ररी माने सब आडू हे परिबो मींस इनफाइनाइट कौन सी गोटिए फिक्स डायरेक्शन नाही बुझियला तो एटा को कहै पिले कोन डायरेक्शन इज आर्बिट्ररी जो वेक्टर मैग्नीट्यूड जीरो डायरेक्शन इज आर्बिट्ररी माने लिखाइ छि पिले इनफाइनाइट मीनिंग तार डायरेक्शन सब आडू हे परिबो कौन सी पर्टिकुलर गोटिए डायरेक्शन रे नुने ताको हमें डिनोट करूचे जीरो ओवर एन एरो और बोल्ड लेटर जीरो टिके आगु कहि छि पिले ए बोल्ड लेटर वेक्टर को रिप्रेजेंट करबाटा इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल सब बेले लिखिले एटा बहुत समय बुझिबो सेति पे हमें ओवर एन एरो कर दउछे ता ऊपर गोटे एरो हेड दउछे क्लियर नेक्स्ट कम्स टू यूनिट वेक्टर व्हाट इज यूनिट वेक्टर द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी व्हाट डू मीन बाय यूनिटी माने 1 यूनिटी that is 1 and direction is fixed गोटे पर्टिकुलर डायरेक्शन रे अछि इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर जहार मैग्नीट्यूड 1 डायरेक्शन गोटे पर्टिकुलर फिक्स्ड डायरेक्शन ताको कहै छै यूनिट वेक्टर फॉर एनी वेक्टर a is any vector its unit vector is denoted by a cap ब्रैकेट रे लिखा है read as a cap a ऊपर गोटे cap this is called a cap ओके तले a cap is equal to a vector by a vector magnitude a vector magnitude divide करले हमें डायरेक्शन पाई जिवो दैट इज a cap and here I cap j cap k cap are the unit vector along x y z axis respectively जति कोऑर्डिनेट स्पेस को जिबा हमर तीनटा म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस अछि गोटे x गोटे y एंड गोटे z पिले x रो यूनिट वेक्टर x एक्सिस रे 1 यूनिट रो मैग्नीट्यूड रे डायरेक्शन को i कैप को जाय y एक्सिस रो 1 यूनिट रो मैग्नीट्यूड रे डायरेक्शन को j कैप को जाय एंड z एक्सिस रे 1 यूनिट रो डायरेक्शन को तो k कैप को जाय पिले तो हियर i cap j cap k cap are unit vector but that is I can write I cap रो magnitude is equal to j cap रो magnitude is equal to k cap रो magnitude all is 1 सब रो magnitude 1 तले हियर हम लिखि परिबा i cap is equal to केते ना x i cap by x जदि x एक्सिस रे हम x डिस्टेंस जिबा तले x डिस्टेंस रे आ वेक्टर रे मैग्नीट्यूड डिवाइड कर दबा x i cap is vector quantity x is the scalar quantity this x x component particular এটা কেতে i cap রইলে similarly y y get cancel j cap z z get cancel k cap this is the unit vector along three mutual perpendicular axes x y z okay next comes to co-initial vector the vector having common initial point are called co-initial vector जो vector सब बड़ा का vector starting point same गोटी पॉइंट पे समय सब स्टार्ट हे थे o a o b o c o d o e एटसेट्रा इस सब रो के स्टार्टिंग पॉइंट इज o पॉइंट तो एटा इनिशियल पॉइंट एटा को जे इनिशियल पॉइंट एंड ऑल दिस पॉइंट आर कॉल्ड टर्मिनल पॉइंट तो टर्मिनल पॉइंट
बट इट लिखा जाय छि वेक्टर हैविंग कॉमन इनिशियल पॉइंट सबरो इनिशियल पॉइंट यदि कॉमन रहला दैट इज कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर दिस इज द ग्राफिक व्यूज नेक्स्ट को टर्मिनस वेक्टर वेक्टर हैविंग कॉमन टर्मिनल पॉइंट वेक्टर हैविंग कॉमन टर्मिनल पॉइंट इज कॉल्ड को टर्मिनस वेक्टर एग्जांपल here BA CA DA EA and FA सबरो टर्मिनल पॉइंट आरो हेड एंड हिच ए पॉइंट रे एटा को जे टर्मिनल पॉइंट बट एबरा सब इनिशियल पॉइंट here B C D E F all are initial point but A is the terminal point तो समस्त को टर्मिनल पॉइंट सेम अछि बोली ताको को जाय को टर्मिनस वेक्टर नेक्स्ट नेगेटिव वेक्टर और ताको को जाय ऑपोजिट वेक्टर व्हाट इज नेगेटिव और ऑपोजिट the vector having same magnitude but opposite direction are called negative vector direction same sorry magnitude same direction opposite example AB this is one vector another is BA same length but direction is opposite kemti direction opposite bile here initial point A terminal point B but here the initial point B terminal point is A suppose जने ऑब्जेक्ट एठू याड को मूव कला ए डायरेक्शन रे गला बट बी रो ए को असला एपट डायरेक्शन आसुची तो ऑपोजिट डायरेक्शन तो ताको को जाय नेगेटिव वेक्टर क्लियर द नेगेटिव वेक्टर ऑफ AB is BA but that is I can write AB vector is equal to minus BA or you can also write BA is equal to minus AB तो both case possible next comes to collinear vector two or more vector are said to be collinear if they all lie in a single line collinear linear माने line सब वेक्टर को collinear कहबा दुई रु अधिक वेक्टर जदि से माने गोटिए लाइन रे अछंती गोटिए लाइन रे सपोज दिस इज द लाइन L this is the line L लाइन ऊपर वेक्टर है B A C A D A सब समस्त अछंती तो A B A C A D A etc all are called collinear vector next comes to coplanar vector what is coplanar vector two or more vector are said to be coplanar planar माने plane सब वेक्टर जदि गोटिए प्लेन रे रहिले all the lie in a single plane is called two or more vector are said to be coplanar if the all lie on a single plane this is the plane ए प्लेन रे A वेक्टर अछि B वेक्टर अछि C अछि D अछि etc जत्ते रहि करियो इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर कैन बी कोप्लानर गोटिए प्लेन रे समेत रहिले ताको कहै छै कोप्लानर वेक्टर गॉट इट okay then next comes to line vector two or more vector are said to be line vector if they have same direction so direction means sense sense is your direction example जंती A B vector आर डायरेक्शन कोड अछि किले इनिशियल पॉइंट A तो टर्मिनल पॉइंट B तो डायरेक्शन B एड को अछि another vector CD whose initial point is C and the terminal point is at D so its direction is towards D तो दीटा जकर एका डायरेक्शन अछि बट B एड को D एड को B D सेम साइड रे अछंती तो सेति में देखो जे लाइक फैक्टर किंतु मैग्नीट्यूड में और मेना भी सेम मैग्नीट्यूड एका बेले को कहिनी देखो AB मैग्नीट्यूड CD मैग्नीट्यूड समान नहीं है डायरेक्शन एका unlike vector two or more vector are said to be unlike if they have opposite direction माने नेगेटिव डायरेक्शन इनिशियल पॉइंट A टर्मिनल पॉइंट B AB वेक्टर रे A रु B एड को डायरेक्टेड हेची एंड CD वेक्टर C रु D एड को डायरेक्टेड हेची आर सेंस होची CD आर सेंस होची AB दीटा जका ऑपोजिट B रहलानी राइट साइड रे D एड डायरेक्शन लेफ्ट साइड रहलानी किंतु मैग्नीट्यूड समान नै के लिए मार्क करो AB एंड CD ए दीटा जका लेंथ समान थाई पारे न थाई पारे तो व्हाटएवर मे बी एठी इक्वल तो लाइक वेक्टर रे मैग्नीट्यूड सेम ही पारे न ही पारे तो सेम डायरेक्शन हेले लाइक डिफरेंट डायरेक्शन हेले ताको कहै छै अनलाइक नेक्स्ट कम्स टू इक्वल वेक्टर two or more vector are said to be equal if they have same magnitude as well as same direction तांकर मैग्नीट्यूड भी समान डायरेक्शन भी समान जेमति कि AB वेक्टर एंड हियर CD वेक्टर एटा इक्वल कहजो काहे कि ना AB वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू CD वेक्टर मैग्नीट्यूड समान तांकर लेंथ समान डायरेक्शन भी समान बट एठी कोन अछि डायरेक्शन समान लेंथ समान नहीं नेक्स्ट दिस इज कॉल्ड इक्वल वेक्टर तले हम गोटे कंक्लूजन ड्रा कले ऑल इक्वल वेक्टर आर लाइक वेक्टर बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू जेते इक्वल वेक्टर सब लाइक एका डायरेक्शन रे अछि
किंतु सबू लाइक वेक्टर गुराक इक्वल हे परिबे नाही काहे कि ना जदि डिफरेंट मैग्नीट्यूड रहिला से इक्वल हे परिबे कि इक्वल गुराक लाइक हे परिबे काहे कि ना इक्वल रो डायरेक्शन सेम अछि लाइक नेक्स्ट सेकंड नोट all opposite or this is called negative also all opposite or negative vector are unlike vector but the converse is not true this is unlike the negative vector के लिए किए the negative vector which like this AB and this is CD and the direction different opposite magnitude same तो here हमें कहि परिबा AB होची नेगेटिव ऑफ CD या AB वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ CD वेक्टर तले अगर कंक्लूजन कोन मिलेला पिले ये कंक्लूजन हैला जे सबु ऑपोजिट वेक्टर अनलाइक है लेकिन अनलाइक पूरा ऑपोजिट हे परिबे नाही सेति पे लिखा जायछि बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू ता उल्टाटा सब बेले सत्य नहे नेक्स्ट कम्स टू स्क्यू वेक्टर से कोची ए नॉन कोप्लानर वेक्टर इज सेड टू बी स्क्यू वेक्टर गोटिए प्लेन रे नथबे एग्जांपल सपोज एटा गोटे प्लेन ए प्लेन ए वेक्टर अछि दिस इज अनदर प्लेन जस्ट वाच टू माय हैंड्स दिस इज द टू प्लेन इट इज वन प्लेन इट इज अनदर प्लेन one vector is on this plane and another vector is on this plane these two vector are not coplanar गोटिए प्लेन रे ना से पे एटु कोन को जेतले स्क्यू वेक्टर this is one plane another plane next comes to the position vector the vector with reference to origin is called position vector what do you mean by with reference to origin na lekha jai the vector whose initial point is at origin starting point origin jodi eta one plane hoye x axis y axis x axis ro unit vector is I cap and y axis ro unit vector j cap origin is here starting point origin roila tale OP टाको कुआजिको पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट P बिकॉज़ ना तार स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन रो स्टार्ट हेछि सही कथा लिखा जाय छै तो वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज ओरिजिन इज कॉल्ड योर पोजीशन वेक्टर क्लियर तो ऑल द टाइप्स ऑफ वेक्टर इज ओवर नेक्स्ट विल गो टू ऑपरेशन ऑन वेक्टर हाउ टू ऑपरेट द वेक्टर यू नो फ्रॉम द अरिथमेटिक देयर आर फोर ऑपरेशन you are familiar all the four operations like your addition subtraction multiplication and division like the arithmetic operation vector can be operate by also addition and multiplication operation on vector so vector can be operated by the same arithmetical operation addition subtraction multiplication and division the first comes to addition how to add two vector ile arithmetic रे तमे ऐड करिचो ऐड जानिचो नंबर एडिशन 2 + 3 you know 5 but a vector plus b vector how to add this aqu add करिया पई we have to go triangle law vector addition comes to triangle law of vector addition what is triangle law vector addition suppose this is the triangle AB this is a vector this is B vector this is B vector and join these suppose ABC represent a triangle and both sides one side is A vector another is B vector BC then third side is AC then third side is AC so by triangle of vector addition AC is the resultant of AB and BC AC is the resultant of AB and BC so therefore here I can write AC vector is equal to sum of these two A vector plus B vector because in a triangle AB and BC are in cyclic direction then its third side in anticyclic represent the resultant of these two now comes to the definition of addition if two sides of a triangle
in same cyclic order, same cyclic direction if two sides of a triangle represent, if two sides of a triangle in cyclic direction, then its third side represent the resultant of first two sides. First two sides of triangle ABC. That is, comes to explanation. The definition can be explained. Let A vector and B vector, let AB is equal to A vector and BC is equal to B vector represent two sides of the triangle ABC, then the third side of triangle ABC, that is SC, is the resultant of AB and BC. So therefore SC vector is equal to AB vector plus BC vector. Yeah, this implies that SC vector is equal to A vector plus B vector. So here two vector A and B is added at here by triangle law of vector addition. दीटा वेक्टर को हमें एक प्रिंसिपल ऐड करी परिबा बाय ट्रायंगल ला वेक्टर एडिशन. ओके, आउ थेबी कहि दोची जदी गोटे ट्रायंगल ला दीटा साइड साइक्लिक डायरेक्शन रे अछंती ए बी बी सी, सेम साइक्लिक फॉर्म, दिस इज द साइक्लिक सेम डायरेक्शन, साइक्लिक डायरेक्शन को को जाय साइक्लिक डायरेक्शन रे अछंती, देन इट्स थर्ड साइड रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ फर्स्ट टू. ई दीटा जकर रिजल्टेंट एटा ऑपोजिट डायरेक्शन रहबो. क्लियर? तबे एक्सप्लेन करा जाय छी जदी ए बी वेक्टर हला ए वेक्टर, बी सी इज बी वेक्टर रिप्रेजेंट टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, देन थर्ड साइड ए सी टा होची रिजल्टेंट ऑफ ए बी एंड बी सी, ए सी इज इक्वल टू ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, बाय ए सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, व्हिच इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. नेक्स्ट, तो प्रॉपर्टीज. तो properties of addition. First, तो commutative law. The commutative law. What is commutative? Suppose A and B are two vector, then by law of commutative, law of the commutative, A plus B is equal to B plus A. Second, associative law. Associative law, if A, B and C are three vector, if A, B and C are three vectors, then by law of associative, A plus B plus C is equal to A plus B plus C. Means second vector to third vector ऐड करी, फर्स्ट ऐड करी बा जा, फर्स्ट वेक्टर को सेकंड वेक्टर ऐड करेंगे, थर्ड वेक्टर ऐड करेंगे, सही है. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड commutative, this is called
associative खाली तो कहि देले पिले होबनी कहीं को मन गले वी हैव टू प्रूव इट आको बर्तमान हमें प्रूव करबा हाउ टू प्रूव फर्स्ट कम्स टू the commutative law first comes to first property to commutative this commutative law of vector addition can be proved by the parallelogram law of vector addition by parallelogram law vector addition. What is the parallelogram law? Suppose this is the parallelogram ABCD. ABCD is a parallelogram. The parallelogram means whose opposite sides are same. But in vector case, every vector, suppose A vector, then BC vector is also A vector because equal vector. And here BC, suppose BC side is represent B vector, then AD side represent also B vector. Now join the diagonal AC. Now join the diagonal AC. In parallelogram ABCD, in parallelogram ABCD, AB vector is equal to BC vector is equal to A vector and AD vector is equal to BC vector is equal to B vector are two opposite sides of the parallelogram ABCD. Now join AC diagonal in triangle ABC by triangle of vector addition जल्दी पिले एटा गोटे पैरेललोग्राम रो डायगोनल को जॉइन करला गोटे ट्रायंगल पाउचे ए ट्रायंगल साइक्लिक डायरेक्शन रे को वेक्टर अछि एपी वेक्टर एंड बीसी वेक्टर तार एसी तार रिजल्टेंट वेक्टर बाय ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन एसी वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट इज एसी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर simply I can write AP vector plus BC vector. So this implies that AC vector मिल गला A vector plus B vector. Okay. Again in triangle ADC. Again in triangle ADC. Here AD vector, BC vector are in cyclic direction. Then AC is the resultant of AD. So therefore AC vector is equal to I can write AD vector plus DC vector. But this implies that AC vector is equal to AD is B vector plus A vector. This is equation 1 and equation 2. From equation 1 and 2, both AC same diagonal of parallelogram. In equation 1, AC diagonal represent A vector plus B vector and AC diagonal represent B vector plus A vector. So therefore, from equation 1 and 2, I can write A vector plus B vector is equal to B vector plus A vector. एटा को कहा जाए तो commutative law, and this is proof which is the commutative law of vector addition. This is the commutative law of vector addition and it is proved by parallelogram law of vector addition. Next we will go to associative law. Associative law, second property, associative law. This associative law, this can be proved by the polygon law of vector addition. Polygon law of vector addition.
What is polygon law? Comes to the diagram. How to prove the properties associated by polygon law? Let this is the polygon AB, BC. Suppose AB vector A, BC is B, CD. Suppose this is C vector. Join AD. Let ABCD is a closed polygon. Is a closed polygon. Closed the polygon where AB vector is equal to A, BC vector is equal to B, and CD vector is equal to C. Now join diagonal AC, join AC in triangle ABC, in triangle ABC. In triangle AB and BC cyclic direction रे अछि ताले resultant की AC by triangular vector addition AC vector is equal to AB vector plus BC vector, or this implies that AC vector we are getting A vector plus B vector. Okay, and in triangle ABC triangle पर बर्तन now comes to triangle ACD. In triangle ACD AD is the resultant of AC vector, CD vector. These two are in cyclic direction. ताले resultant की AD परिबो AD. So AD vector is equal to AC vector plus CD vector by triangular vector addition. This is by triangle law of vector addition. So triangle law of addition. This is by triangle law of addition. So this implies that AD vector is equal to, we are getting what is AC? AC value first row by search A vector plus B vector and plus CD is equal to what? CD. The CD vector is given C vector. Well, this is C vector. Okay, equation 1. Now join again, join BD vector, join BD vector, join BD vector in triangle BCD. तो कहले पहले BCD triangle रे BCD triangle cyclic direction को वेक्टर अछि BC and CD ताले resultant की हेगला BD. So therefore BD vector is the resultant of BC plus CD, but this implies that BD vector is equal to BC vector is B vector plus CD vector is C vector. Okay. Again in triangle ABD, in triangle ABD, here AB and BD in cyclic direction, then AD is in opposite, then therefore AD is the resultant of AB and BC, AB plus BC. Yeah, this implies that AD vector we are getting. What is AB vector? AB vector is given A vector. And BC, we concluded that by triangle law of vector addition. This is also by triangle law of vector addition. हमें डेटा पाई जाए चे BD is equal to B plus C. तो what you mark? इधर equation 2. Equation 2 रे AD vector अच्छी A vector plus B plus C. Equation 1 रे AD vector is also A plus B bracket plus C. तो both LHS AD vector same. Then from equation 1 and 2. Equation 1 to कौन पाई गले? इधर तक AD vector same. So therefore A plus B bracket plus C here is equal to A vector plus bracket B plus C. This is associative law, which is called associative
law of vector addition. So clear? This is called associative law of vector addition. So here the properties of vector addition is over. One is the commutative, second is associative. Vector addition रो जो तीन property के लिए कहली गोटे commutative and associative. Commutative is proved by the parallelogram law, associative is proved by the polygon law. Second operation comes to subtraction. Subtraction. Two or more vector can be subtracted by triangle law of vector addition. By triangle law of vector addition. Subtraction is also a type of addition. जल्दी suppose तुमको number को अगला मिले 2 minus 3. What exactly we are doing at here? 2 plus of minus 3. But negative radical in number टा add होची 2 से. It is subtraction can be drawn by subtraction by this is also vector addition by triangle of vector addition. Suppose it is AB vector A and BC. This is BC vector BC. This is B vector. Join AC. So AC is the resultant of AB and BC. Which is equal to, I can write AC vector is equal to A vector plus B vector. Now draw the negative vector of BC. The negative vector of BC means opposite vector of BC. BC रो opposite vector suppose BT. तले जल्दी BC है ना B vector तले BT के ताऊ मिले ना minus B vector because negative vector join AD in triangle ABC. AB vector is equal to A and BC vector is equal to B vector. Then by triangle law of vector addition, then triangle law of vector addition, AB is equal to, sorry, AC vector is equal to AB plus BC. But this implies that AC vector is equal to A vector plus B vector. Now draw the negative vector of BC, that is BT. तो therefore BT vector कहते हैं जल्दी BC रो नेगेटिव वेक्टर का मैं ड्रा कर ले ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ BC तले BT is equal to minus of BC. But this implies that BT vector we are getting minus of B vector, minus B vector. Now in triangle ABD, here AB and BD are in same cyclic direction. So AD is the resultant. So therefore AD vector is equal to AB vector plus BD vector. But this implies that AD vector is equal to A vector plus B. What is B vector? What is BT? We are getting BT is equal to minus B vector. But this implies that AD vector is equal to A vector minus B vector, which is called subtraction of vector. Subtraction of vector. The vector can be subtract like this. So clear? And next we will go to resolution of vector. In the next class we will discuss the resolution of vector. मार दो, अब इनके लिए सो करो।